Namaskar students, I am Javier, Dr. Raju Kumawat, Faculty of Agriculture and Veterinary Science. Today we will discuss social institutions. Social institution. What are the social institution and what is type of social institutions? So आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या है, इनके क्या टाइप्स है और अपन इनकी स्टडी क्यों करते हैं. So social institution and social mechanism, the social order and the corporations and the governed by the behavior of the its members. Social institution is a group of social positions concerned by the social relations performing a social role. Any institution in a society that work the socialize the group of people in it. So सोशियोलॉजी जो है वो समाज की एक व्यवस्था या फिर समाज का एक मैनेजमेंट है जो कि जो भी सोसाइटी है उसके रूल क्या है, उसके रेगुलेशंस क्या है, उसकी क्या नीड्स है, उसकी कार्य प्रणाली कैसी है, इन सब को जो संस्था जोड़ने का काम करती है अपन उसको कहते हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस. सोशल इंस्टीट्यूशंस जो होती है वो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस को भी गवर्न करती है. इंडियन जो है उसके रूल रेगुलेशंस क्या है, उसको अपनी अर्थव्यवस्था को अपन कैसे चला सकते हैं उसको गवर्न करती है, वो है सोशल इंस्टीट्यूशंस. The social institution characteristics of the institutions. सोशल इंस्टीट्यूशंस आर द पर्पजली. जो सोशल इंस्टीट्यूशंस जो होती है वो पर्पजली होती है, रिलेटिवली जो होती है वो परमानेंट इन नेचर होती है. सोशल इंस्टीट्यूशन जो होता है वो टेम्परेरी नेचर के अंदर नहीं होता, वो परमानेंटली होता है. ये नहीं कि आज तो सोशल इंस्टीट्यूशन आपने बना लिया, कल आपका वो सोशल इंस्टीट्यूशन आप हटा दिया, तो अपना एक सोशल इंस्टीट्यूशन. इंस्टीट्यूशन आर द यूनिफाइड स्ट्रक्चर. जो इंस्टीट्यूशन का जो स्ट्रक्चर होता है वो यूनिफाइड होता है. इंस्टीट्यूशंस आर द नेसेसरी वैल्यू लैंडन. फंक्शन ऑफ द इंस्टीट्यूशंस या सोशल इंस्टीट्यूशंस से उनके क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं. सो फर्स्ट फंक्शन ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन इज इंस्टीट्यूशन सिंपली सोशल बिहेवियर फॉर द इंडिविजुअल पर्सन्स. सोशल इंस्टीट्यूशंस जो होता है वो क्या शो करता है, सिंपली बिहेवियर ऑफ ह्यूमन या पीपल. प्रोवाइड द रेडी मेड फ्रॉम ए सोशल रिलेशंस एंड द सोशल रोल फॉर द इंडिविजुअल्स. Act as the agencies of the coordinations and the stability for the total culture. Control behavior of people. Now, the major social institutions. First social institution is the family. Second, education social institutions, religion social institutions, economic social institutions, and government and social institutions. First, we discussed family social institutions. The family social institution is the smallest social institution with the unique functions of the producing and rearing the young. It is the basic unit of the Philippine society and the educational system where the child being the learn his ABC. So, family एक ऐसा social institution है जो कि अपने को लर्न करने, जहाँ से अपन बचपन से ही वहाँ पे अपन सीखते हैं, वो होता है अपना सोशल इंस्टीट्यूशन. द बेसिक एजेंट्स ऑफ द सोशलाइजेशंस बिकॉज इट इज हियर विद द इंडिविजुअल डेवलप्ड वैल्यूज बिहेवियर एंड वे ऑफ द लाइफ और थॉट. कंटिन्यू द फंक्शन ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली. रिप्रोडक्शन ऑफ द रेस एंड द rearing of the young, culture and transmission of the enculturations, socializations of the child, providing affections and a sense of the security, provide the environmental for the personality development and the growth of self concept in the relations to the other, providing the social status. So जो social institution of family है वो social status भी provide करवाती है. Now we discussed social institution of education. Education is the learning in which the knowledge, skill and habits of group are the transfer from one generation to next through the teaching, training और research. एजुकेशन क्या होती है? एजुकेशन जो होती है, जो अपना नॉलेज होता है उसको
एक ग्रुप से या फिर एक व्यक्ति से अपन दूसरे व्यक्ति तक उसको फैलाते हैं या फिर उसको देते हैं, वो होता है अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर स्कूल्स भी हो सकते हैं, कॉलेजेस भी हो सकते हैं, वो इनफॉर्मल एजुकेशन भी उसके अंदर अपन इंक्लूड कर सकते हैं। ना मल्टीपल फंक्शन ऑफ द स्कूल्स, जो स्कूल्स होते हैं उनके मल्टीपल फंक्शन या वो सोशल इंस्टीट्यूशन के अंदर मल्टीपल फंक्शन कैसे करता है। टेक्निकल इकोनॉमिक्स उसके अंदर होती है, उसके अंदर अपन स्टडी करते हैं ह्यूमन और सोसाइटी या सोशियोलॉजी की, पॉलिटिकल स्टडी करते हैं, कल्चर के बारे में अपन उसके अंदर स्टडी करते हैं, एजुकेशन के बारे में अपन उसके अंदर स्टडी करते हैं। व्हाट इज द रिलीजन्स, रिलीजन सोशियोलॉजी क्या होता है। रिलीजन सोशियोलॉजी इज ए सिस्टम ऑफ बिलीफ एंड रिचुअल्स दैट serve to bind people together through the shared worship, thereby they create a social group. Set of the belief and the practices that the pertain the secure the realm that the guidance human behavior and give the meaning of life among the community of the believers. Now we discussed economic institutions. Economic institutions क्या होते हैं। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो अपने इकोनॉमिक को जो गवर्न कर, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन जो होते हैं उनका मेन वर्क होता है कि वो जो अपनी इकोनॉमिक है, अपनी अर्थव्यवस्था है, उसको गवर्न करता है, वो होता है अपना इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं और वो ग्रुप के अंदर भी हो सकते हैं, और जो भी अपनी जो इकोनॉमिक है, जो अपनी अर्थव्यवस्था है, उसको इंडिविजुअली और रूल्स उसके रेगुलेशन, रूल क्या है उसके रेगुलेशन से उसको गवर्न करती है इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। एंड द इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन वी डिस्कस्ड माइक्रो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। माइक्रो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस क्या होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूशंस मीन्स, माइक्रो मीन्स होता है स्मॉल लेवल पे, MICRO, आई मीन्स होता है इंडिविजुअल स्टडी, होता है अपना माइक्रो इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूशंस। So the concepts with the specific economics units a part of the max and economic system and the relationship between those parts. Emphasis is the place on the understanding the behavior of individual firms. So microeconomics institutions के अंदर कोई भी फॉर्म है उसके अंदर अपन उसकी स्टडी करते हैं इंडिविजुअली, और इंडस्ट्रियल हाउस होल्ड जो है उनकी भी अपन स्टडी करते हैं इंडिविजुअली। Microeconomics institutions also called a price economics institutions. Now we discuss macroeconomics institutions. First I discuss microeconomics institution. Now I discuss macroeconomics institution. So micro, MICRO, I means individual, and then we discussed macroeconomics institutions, MACRO, A means aggregate, I means MICRO, I means individual. So मैक्रोइकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूशंस वो होते हैं जैसे अपन कोई किसी भी चीज़ की ग्रुप के अंदर या फिर लार्जेस्ट अमाउंट्स के अंदर उसकी अपन स्टडी कर रहे हैं, वो होता है अपना मैक्रोइकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूशंस। Concerns with the economic as a whole, a large segmentations of it. It focuses on such problems as the role of unemployment, the charging level of the pricing, the nation's total output of goods and services, and the way in which the government rise and the spread the money. So मैक्रो इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूशंस जो है वो इकोनॉमिक का एक इंस्टीट्यूशंस है जिसके अंदर अपन कोई भी प्राइस है या फिर प्राइस चार्ज कर रहे हैं, आउटपुट ऑफ इनपुट का अपन गुड्स का कर रहे हैं, नेशंस को अगर अपन देख रहे हैं, नेशंस के इकोनॉमिक को देख रहे हैं, तो उनकी जो इकोनॉमिक्स जो होती है उसको अपन देख रहे हैं एट ए ब्रॉड लेवल पे, न कि नैरो या फिर इंडिविजुअल लेवल पे, वो होता है अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूशंस। नाउ है गवर्नमेंट एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस। Social institution, government institution is the institutions which solve the problems public nature and involve the more than a few people. The as they define the government, the social institution defines the government as the institutions by which and the independent society makes and the carries out those the rules of actions which are necessary to the enable man to live.
in a social stand, or which are the imposed upon the people for the society by those who possess the power of authority of the prescription them. Thank you.